The session is being recorded, and in today's class, we are starting IELTS listening part 1. कल हमने इसकी बुनियाद डाल दी थी और आज हम उसी बुनियाद को फॉलो करते हुए आगे चल रहे हैं। जो लोग कल के सेशन में मौजूद नहीं थे वो परेशान ना हो। आज हम आइल्स लिसनिंग पार्ट 1 का हमारा आज पहला ये लेक्चर है। इससे पहले हमारा इंट्रोडक्टरी एक सेशन, ठीक है, और उसको लाजमी देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है उससे। और आज हम फॉलो कर रहे हैं बुक 16 published by Cambridge University Press. हम फॉलो करने जा रहे हैं बुक 17। Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. अच्छा भाई, ये आपके पास पार्ट 1 आ गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जब आप मुकम्मल कर लेते हैं तो आपके पास आखिर में 10 मिनट होते हैं कि आप अपने आंसर्स को आंसर शीट में ट्रांसफर करें। उससे पहले आंसर्स को ट्रांसफर करने की बेवकूफी मत कीजिएगा। इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको अपने आंसर्स अपने इसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखने होते हैं, ठीक है। तो आप इसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो आपके हाथ में होगा उसी पर आप लिखेंगे। अब आपके पास जो पेपर में सवाल आता है वो किस तरह से आता है कि आपसे कुछ कभी नाम पूछ लिए जाते हैं, कभी आपसे एड्रेस पूछा जाता है, कभी कोई लोकेशन पूछी जाती है, कभी आपसे जेंडर पूछा जाता है, कभी साइज, कभी कलर, कभी कोई क्लॉथिंग के बारे में, प्रोफेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है। अच्छा, कभी कभार लिसनिंग का टेस्ट इतना आसान आ जाता है कि हम गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या आने वाला है। लेकिन जैसे यहाँ पर अगर आप की चैट्स में पढ़ रहा हूँ, जरा चैट्स सब अपनी ऑन कर लेंगे। मैं लिसनिंग के सेशन में मैं चैट्स पर आपके आंसर्स को देख रहा होता हूँ और आपसे बातें कर रहा होता हूँ। तो अब आप चैट में मुझे बताइए कि अगर अब पहले वाले में हम कोई गैस नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे वाले में आप गैस कर सकते हैं कि नो क्या हो सकता है। नो पार्किंग हमने देखा अपनी जिंदगी में, हमने कहां कहां पर नो लिख पढ़ा है। नो, नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, ऐसा पढ़ा है ना हमने। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर नो पार्किंग हो सकता है, नो स्मोकिंग हो सकता है। ये हमने पहले से गैस कर लिया कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसी तरह से मैं अट्रैक्ट। अब याद रखो, यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना, जो डैश से पहले होते हैं, जो डैश से पहले लिखे हुए, जैसे यहाँ लिखा हुआ अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट नहीं बोलेगा। यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ। अच्छा, हो सकता है तुम्हें ऑफ सुनाई दिया जाए, लेकिन टाइप्स की जगह वो कुछ और इस्तेमाल करे। और फिर यहाँ लिखता है बिल्डिंग आ न्यू। अब न्यू की जगह वो कुछ और बना सकता है, बिल्डिंग की जगह पर कुछ और लेकर आएगा। ये वर्ड्स बदल जाएंगे। आइए सुनते हैं साथ साथ क्या तब्दीलियां करता है वो देखते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है स्पेलिंग, बहुत वर्ड समझ आ जाता है, स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो आपको अपनी स्पेलिंग को भी अपने पास नोट करना है। Part 1. Students 1 to 5. Hello? Oh, hello. My name's Jan. Are you the right person to talk to about the Buckworth Conservation Group? Yes, I'm Peter. I'm the secretary. Good. We've just moved to this area and I'm interested in getting involved.
I was in a similar group where I used to. Questions 1 to 5. Hello? Oh, hello. My name's Jan. Are you the right person to talk to about the Buckworth Conservation Group? Yes, I'm Peter. I'm the secretary. Good. I've just moved to this area and I'm interested in getting involved. I was in a similar group where I used to live. Could you tell me something about your activities, please? Of course. Well, we have a mixture of regular activities and special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. अब देखिए इसने कहीं पर भी डज नॉट हैव नहीं बोला, उसने रेगुलर एक्टिविटीज बोला, उसने बीच का वर्ड बोला, और उसके बाद उसने जो बात कही उसमें आपका जवाब भी आ गया। उसने कहा मेकिंग श्योर द बीचेस डज नॉट हैव। जो यहां पर बात लिखी हुई होती है वो एग्जैक्टली वो नहीं बोलेगा, ये बात जहन में रखिएगा। अगर आप डज नॉट हैव को आंखों में रख के और कानों में सुनने के लिए तैयार है तो कभी भी आप जवाब पर नहीं पहुंचेंगे। आपको इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है, क्या कह रहा है वो। Well, we have a mixture of regular activities and आप देखिए जब उसने रेगुलर एक्टिविटीज बोला तो वो ऊपर लिखा हुआ है, अब आप नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, रेगुलर एक्टिविटीज हो गया, उस पर अब आगे पेंसिल को अपने इस तरह से, जो आपका आपके पास पेंसिल है उसको इस तरह से रखना है। मेरा ये जो कर्सर है ना, इसको देखिएगा सर किस तरह से इसको मूव करते हैं। special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. A few of us spend a couple of hours a month on it. अब आप ये देखिए कि आपको वो किस तरह से बोलता हुआ निकल गया, लेकिन उसने कोई भी आपको ये नहीं कहा डज नॉट हैव। अब आपने बताइए आपने कौन सा वर्ड सुना, अब आप जवाब में क्या लिख रहे हैं। सर मुझे सुनाई तो दिया, जो समझ तो आ रहा है इसने ये बोला है डज नॉट हैव कपल ऑफ आवर्स, मेकिंग श्योर द बीच डज नॉट हैव कपल ऑफ आवर्स। सोच लो क्या हो गया, सोच समझ के बेटा, कैसी बात कर रही है। कपल ऑफ आवर्स कोई सेंस भी तो बने ना बेटा। और बाकी लोग, अच्छा अगर आपको नहीं समझ आए तो क्रॉस लगाए कि सॉरी सर, क्रॉस या बैक एरोज होते हैं, इसका मतलब ये होता है दोबारा, दोबारा प्ले करें, दोबारा सुनाइए, नहीं समझ आया क्या कहा उसने। आपने देखा उसने पहली बॉल वकार यूनिस की तरह बिल्कुल यॉर्कर मारी, गिल्ली उखड़ गई, पहला ही जवाब कानों से निकल गया, जबकि वो उसने बोल दिया। चले दोबारा सुने, तो ये तीसरी दफा मैं रिपीट करूंगा। Just moved to this area and I'm interested in getting involved. I was in a similar group where I used to live. Could you tell me something about your activities, please? Of course. Well, we have a mixture of regular activities and special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. A few of us spend a couple of hours a month on it, and it's awful how much there is to clear. यस, चौथी दफा प्ले करने जा रहा हूँ, कोई जवाब मौसूल नहीं होगा। I was in a similar group where I used to live. Could you tell me something about your activities, please? Of course. Well, we have a mixture of regular activities and special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. One, trying to keep the beach free of litter. Vocabulary नहीं है ना, making sure the beach does not have dash on it. किसी ने लिख दिया ग्लिटर, वो तो बेटा आंखों पे लगा ले, चमक वाला पेन होता है ना ग्लिटर, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं लेटर। अब ये वर्ड कभी नहीं सुना, वो क्या, जब अब कोई लेटर लिखता है तो LITER लिख देता है, जबकि ये क्या है लेटर। अब देखिए it means sometimes words are very easy and sometimes words are easy but we don't know the meaning of that word। और यहाँ पर पहली बॉल पे सब बोल लोगे, पूरी क्लास बोल लोगे। आगे सुने। A few of us spend a couple of hours a month on it, and it's awful how much there is to clear. I wish people would be more responsible and take it home with them. I totally agree. I'd be happy to help with that. Is it okay to take dogs? I'm afraid not, as they're
किस चीज के लिए उसने नो बोल दिया? स्मोकिंग, पार्किंग, किस बात पर नो बोला है उसने? नो डैश। क्या लिखेंगे? वेरी गुड संजीदा, वेरी गुड गैलेक्सी टैब। और बाकी लोग जवाब लिखे, मुझे पता चलता है कि क्लास का लेवल क्या है। दोबारा, बेटा दोबारा सुने, बहुत आसान है। A few of us spend a couple of hours a month on it, and it's awful how much there is to clear. I wish people would be more responsible and take it home with them. I totally agree. I'd be happy to help with that. Is it okay to take dogs? I'm afraid not, as they're banned from the beach itself. किस चीज को बैन कर दिया उसने? क्या पूछा उसने? वेरी गुड हाजरा। डॉग्स, नॉट बैग्स बेटा, डॉग्स, डॉग्स। You can take them along the cliffs, though, and children are welcome. Right. We also manage a nature reserve, and there's a lot to do there all year round. For example, अच्छा, आप देखिए, जिसको ये नेचर रिजर्व्स की बात कर रहा है, मेंटेनिंग पार्क्स, नेस्टिंग बॉक्सेस फॉर बर्ड्स इंस्टॉल्ड, यहां तक वो बोलेगा। नेक्स्ट टास्क इज टेकिंग एक्शन टू अट्रैक्ट, वो ये बात कैसे बोलेगा सुनिएगा। because it's a popular place to visit, we spend a lot of time looking after the paths and making sure they're in good condition for walking. I could certainly help with that. Good. And we have a program of creating new habitats there. We've just finished making and installing nesting boxes for birds to use. And next, we're going to work on encouraging insects. They're important for the biodiversity of the reserve. उसने अट्रैक्ट इज इक्वल टू इनकरेज। उसने इनकरेज के बाद क्या कहा? किसको अट्रैक्ट करेंगे वो, किसको इनकरेज करेंगे? अट्रैक्ट और वेरी गुड इंसेक्ट्स। अट्रैक्ट इज इक्वल टू इनकरेज। दोबारा सुनिएगा। And we have a program of creating new habitats there. We've just finished making and installing nesting boxes for birds to use. And next, we're going to work on encouraging insects. They're important for the biodiversity of the reserve. सर की बात सच हो गई कि वो अट्रैक्ट का वर्ड नहीं बोलेंगे, वो अट्रैक्ट की जगह कोई दूसरा वर्ड बोलेंगे, और उन्होंने क्या बोला? इनकरेज। Certainly are. Oh, and we're also running a project to identify the different species of butterflies. डिफरेंट स्पीशीज ऑफ, मैंने आपसे कहा था ना कि प्रेपोजिशन नहीं बदलता, लेकिन प्रेपोजिशन से जो पहले वाली चीज है वो बदल सकती है। तो उसने क्या कर दिया? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ। दोबारा सुन लेंगे। Work on encouraging insects. They're important for the biodiversity of the reserve. They certainly are. Oh, and we're also running a project to identify the different species of butterflies that visit the reserve. You might be interested in taking part in that. Sure. I was involved in something similar where I used to live, counting all the species of moths. I'd enjoy that. Another job we're doing at the reserve is replacing the wall on the southern side between the parking area. ये जो वर्ड इससे बोला ना, ये जिस तरह से प्रोनाउंस किया है, बच्चा पहुंच ही नहीं पाया। मैंने इसको 6 मरतबा सुना, फिर जाकर देखना पड़ा बोलता क्या है ये। इसका एक्सेंट देखिएगा कितना है, कितना कॉमन वर्ड, लेकिन बोल कैसे रहा है। बिल्डिंग अ न्यू क्या? Where I used to live, counting all the species of moths. I'd enjoy that. Another job we're doing at the reserve is replacing the wall on the southern side. उसने बिल्डिंग की जगह पर क्या बोला? रिप्लेसिंग। लिखते रहा करो बेटा, ये बिल्डिंग की जगह पर क्या बोला? रिप्लेसिंग। अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो? दोबारा सुनो। In something similar where I used to live, counting all the species of moths. I'd enjoy that. Another job we're doing at the reserve is replacing the wall on the southern side. आई कैच हुआ?
नहीं. Been taking part in that? Sure. I was involved in something similar where I used to live, counting all the species of moths. I'd enjoy that. Another job we're doing at the reserve is replacing the wall on the southern side, between the parking area and our woodshed. It was bad. Building a new wall है बेटा. ठीक है ना ये. अब वॉल किस दोबारा सुनो. अब देखो WALL सुनो दोबारा. I was involved in something similar where I used to live, counting all the species of moths. I'd enjoy that. Another job we're doing at the reserve is replacing the wall on the southern side. देखा. अभी भी मैंने बता दिए जवाब, लेकिन अभी भी तुम्हारे कानों में वो वर्ड जा नहीं रहा होगा जो ये बोल रहा है. वॉल, रिप्लेसिंग अ वॉल. Between the parking area and. अच्छा, अब आगे आप जाएंगे तो आपसे कहेगा you have some time to look at questions 6 to 10. Our woodshed. It was badly damaged in a storm last month. Okay. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. अब लिखा हुआ रीच द, कोई लोकेशन बतानी है. वेयर एप्रोप्रिएट, क्या पहनना है एप्रोप्रिएट. सुटेबल फॉर, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए. मेकिंग डैश आउट ऑफ वुड, लकड़ी से क्या बना रहे हैं. और उसके बाद आखिर में आपको अमाउंट बताना है. कॉस्ट ऑफ सेशन, नो कैंपिंग और कितने पाउंड्स. चलिए. Reach the. Now listen and answer questions 6 to 10. Then, as I said, we have a program of events as well, both at the weekend and during the week. Right. I presume you have guided walks. I'd like to get to know the local countryside as I'm new to the area. Yes, we do. The next walk is to Ruston Island a week on Saturday. We'll be meeting in the car park at Dunsmore Beach at low tide. That's when the sands are dry enough for us to walk to the island without getting wet. Sounds good. The island's a great place to explore. It's quite small and it's got a range of habitats. कहाँ पहुंचना है. Reach the Ruston Island a week on Saturday. We'll be meeting in the car park at Dunsmore Beach at low tide. That's when the sands are dry enough for us to walk to the island without getting wet. Sounds good. अच्छा, अब आइलैंड की स्पेलिंग वेरी गुड. आइसलैंड, आइलैंड, आइसलैंड, आइलैंड. अब आइसलैंड और आइलैंड लिखना कैसे लिखेंगे. आयरलैंड नहीं बेटा, आइलैंड. The island's a great place to explore. It's quite small and it's got a range of habitats. It's also an ideal location for seeing seals just off the coast or even on the beach. Okay. And is there anything we should bring? Like a picnic, for instance? Yes, do bring one. It's a full day walk. And of course, it'll be wet walking across and back, so make sure your boots are waterproof. I must buy a new pair. There's a hole in one of my current ones. Wear appropriate what? स्कार्फ, जैकेट या कुछ और बोला उसने. क्या पहनने की बात हुई है. वेरी गुड. चैट में लिखने की आदत डाले बेटा. चैट में नहीं लिखेंगे ना तो मुझे एहसास नहीं होगा कि समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे. जवाब पर पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे. ठीक है ना. क्लॉस की तो बात ही नहीं हुई है ना बेटा. बिल्कुल ही आउट चली गई आप तो. Yes, do bring one. It's a full day walk. And it's small and it's got a range of habitats. It's also an ideal location for seeing seals just off the coast or even on the beach. Okay. And is there anything we should bring? Like a picnic, for instance? Yes, do bring one. It's a full day walk. And of course, it'll be wet walking across and back, so make sure your boots are waterproof. I must. तो वेयर एप्रोप्रिएट क्या पहने. वो बूट्स पहने या कपड़े पहने.
या जैकेट पहने, जैकेट का तो कोई वर्ड ही नहीं आया, ठीक है ना। तो आपको एक वर्ड लिखना है, एक वर्ड लिखने की इजाजत है, तो आपको सिर्फ बूट्स लिखना है। suitable for dash to participate in. Buy a new pair. There's a hole in one of my current ones. Well, I'd definitely like to come on the walk. Great. Then later this month, we're having a one-day woodwork session in Hopton Wood. I've never tried that before. Is it okay for beginners to take part? Definitely. There'll be a couple of experts leading the session, and we keep the number of participants down, so you'll get as much help as you need. Excellent. I'd love to be able. There'll be a couple of experts leading the session, and we keep the number of participants one-day woodwork session in Hopton Wood. I've never tried that before. Is it okay for beginners to take part? Definitely. There'll be a couple of experts leading the session. अच्छा, अब देखिए इसमें सवाल वो पूछती है और जवाब वो देता है, यस ऑफ कोर्स। तो अब उसने पूछा इज इट ओके फॉर बिगिनर्स, तो उसने कहा यस ऑफ कोर्स। उसने सुटेबल का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने इस्तेमाल, लड़की ने पूछा इज इट ओके फॉर बिगिनर्स, उसने कहा यस ऑफ कोर्स। So suitable for beginners. Session, and we keep the number of participants down, so you'll get as much help as you need. Excellent. I'd love to be able to make chairs. That's probably too ambitious for one day. You'll be starting with wooden spoons, and of course, learning how to use the tools. And anything you make is yours to take home with you. That sounds like fun. When is it? It's on the Making dash out of words, क्या बना रहे बताइए। spoons, and of course, learning how to use the tools. Chairs. That's probably too ambitious for one day. You'll be starting with wooden spoons, and of course, learning how to use the tools. And anything you Making spoons out of wood, कुछ बच्चे टूल्स लिख देते हैं वो, और टूल्स का इस्तेमाल सिखाएंगे वो, लेकिन बनाएंगे क्या, बनाएंगे क्या। Love to be able to make chairs. That's probably too ambitious for one day. You'll be starting with wooden spoons, and of course, learning how to use the tools. And anything you make is yours to take home with you. That sounds like fun. When is it? It's on the 17th from 10 a.m. until 3. There's a charge of £35, including lunch, or £40 if you want to camp in the wood. I should think. और अमाउंट क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ सेशन। There's a charge of £35, including lunch, or £40 if you want to camp in the wood. I should think. अगर कैंपिंग लेंगे तो क्या चार्जेस होंगे, 40। अगर कैंपिंग नहीं लेंगे तो 30। 30 और 40 दो वर्ड्स आए, और जैसे ही ये खत्म होता है उसके फौरन बाद आपके जवाब आ जाते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए, यहाँ पर ना 30 है ना 40 है, तो आगे सुनिए। Come home the same day. Well, when is it? It's on the 17th from 10 a.m. until 3. There's a charge of £35, including lunch, or 35 pounds। 35 और 40 बोला, 30 तो बोला ही नहीं, कुछ बच्चों ने लिख के भेजा 30। £40 if you want to camp in the wood. I should think I'll come home the same day. Well. Voluntary work. चले बेटा, अब आपका एक है मिनी मॉक, और आपके लेवल को जज किया जा रहा है। तमाम स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर पेंसिल मंगवा लीजिए। अगर आपके पास पेंसिल नहीं है, चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे पेपर पर, आपके सामने स्क्रीन पर आपका टेस्ट है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो एवरीवन्स स्कोर, कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपका स्कोर 1 2 3 आया तो अल्लाह हाफिज, अभी आइल्स आपके लिए है ही नहीं। अगर आपने स्कोर किया 5 तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी। अगर आपने स्कोर किया 6 और 7, इसका मतलब है यू आर अ गुड यूजर। और अगर आपका स्कोर 8 9 10 में आ गया तो इसका मतलब ये कि इंशाल्लाह यू विल क्रॉस 7+।
ठीक है। अगर आप 1 2 3 लेकर आते हैं, मैंने बता दिया है, तो उसके बाद आप लैंग्वेज क्लासेस की तरफ शिफ्ट कर जाइएगा, बेहतर होगा आपके लिए। 1 2 3 वाले स्टूडेंट्स आइल्स में नहीं चल पाते, ये 19 साल का तजर्बा कह रहा है, क्योंकि ये पार्ट सबसे आसान है। एक एवरेज लर्नर जिसने आइल्स की तैयारी शुरू भी नहीं की है, जैसे आप लोग हैं, आज आप इसको सुनकर आपका स्टार्टिंग स्कोर 5 होना चाहिए मिनिमम। अगर नहीं आया तो फिर आप एक टेस्ट और ट्राई कीजिएगा आज, कि देखें 5 से नीचे आता है, फिर ट्राई कीजिएगा, फिर कंफर्म हो जाएगा। तो 3 ट्राई कीजिए आप। ये पहला ट्राई करते हैं विदाउट माय एक्सप्लेनेशन, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, आप खुद इसको पढ़िए, खुद फैसला कीजिए कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अगले जो अभी इसके बाद अगला टेस्ट होगा उसमें मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। Look in the village that he has just moved to. First, you have some time to look at questions 1 to 7. Now listen carefully and answer questions 1 to 7. Hello, Jane Fairbanks speaking. Oh, good morning. My name's Frank Pritchard. I've just retired and moved to Southo. I'd like to become a volunteer, and I gather you coordinate voluntary work in the village? That's right. What sort of thing could I do? Well, we need help with the village library. We borrow books from the town library, and individuals also donate them. So one thing you could do is get involved in collecting them. If you've got a car, that is. Yes, that's no problem. The times are pretty flexible, so we can arrange it to suit you. Oh, another thing is the records that we keep of the books we're given, and those we borrow and need to return to the town library. It would be very useful to have another person to help keep them up to date. Right. I'm used to working on a computer. I presume they're computerized? Oh, yes. Is the library purpose-built? I haven't noticed it when I've walked around the village. No, we simply have the use of a room in the village hall, the West Room. It's on the left as you go in. Oh, I must go and have a look inside the hall. Yes, it's a nice building. Do you run a lunch club in the village for elderly people? I know a lot of places do. Yes, we have a very successful club. I could help with transport, if that's of any use. Oh, definitely. People come to the club from neighbouring villages, and we're always in need of more drivers. And does the club have groups that focus on a particular hobby too? I could get involved in one or two, particularly if there are any art groups. Excellent. I'll find out where we need help and get back to you. Fine. What about help for individual residents? Do you arrange that at all? Yes, we do it as a one-off. Oh, in fact, there's Mrs. Carroll. She needs a lift to the hospital next week, and we're struggling to find someone. When's her appointment? On Tuesday. It would take the whole morning. I could do that. Oh, that would be great. Thank you. And also next week, we're arranging to have some work done to Mr. Salisbury's house before he moves, as he isn't healthy enough to do it himself. We've got some people to decorate his kitchen, but if you could do some weeding in his garden, that would be wonderful. Okay, I'd enjoy that. And presumably the day and time are flexible. Oh, yes. Just say when would suit you best, and we'll let Mr. Salisbury know. Good. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 8 to 10.
Now listen and answer questions 8 to 10. The volunteers group also organises monthly social events, which is a great way to meet other people, of course. Uh-huh. So next month, on the 19th of October, we're holding a quiz. A couple of residents are great at planning unusual ones, and we always fill the village hall. That sounds like fun. Can I do anything to help? Well, because of the number of people, we need plenty of refreshments for halfway through. So if you could provide any, we'd be grateful. I'm sure I could. I'll think about what to make and let you know. Thank you. Then on November the 18th, we're holding a dance, also in the village hall. We've booked a band that specialises in music of the 1930s. They've been before, and we've had a lot of requests to bring them back. I'm not really a dancer, but I'd like to do something to help. Well, we sell tickets in advance, and having an extra person to check them at the door as people arrive would be good. It can be quite a bottleneck if everyone arrives at once. Okay, I'm happy with that. We're also arranging a New Year's Eve party. We're expecting that to be a really big event. So instead of the village hall, it'll be held in the Mountfort Hotel. The Mountfort. Mountfort Hotel. It isn't in Southo itself, but it's only a couple of miles away. The hotel will be providing dinner, and we've booked a band. The one thing we haven't got yet is a poster. That isn't something you could do by any chance, is it? Well, actually, yes. Before I retired, I was a graphic designer, so that's right up my street. Oh, perfect. I'll give you the details, and then perhaps you could send me a draft? Of course. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers to part 1. चलो अब बताइए स्कोर You स्कोर प्लीज पेपर में ऑप्शन नहीं होता कि आप अपनी ऑडियो को दोबारा रिपीट करें, बस ऑडियो एक दफा चलना शुरू होती है तो बस आखिर में अब रुकेगी, उसके बाद आपका पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। अब आप स्कोर बताइए। 8। ईमानदारी से बताइए, आपका स्कोर सिर्फ मुझे दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा। 9, 6 और गैलेक्सी और एचपी अपना नाम भी लिख दे बेटा, ये गैलेक्सी और एचपी कौन है, नाम भी मेंशन करें अपना। 5 बिल्कुल कन्नों पर आए, बहुत मेहनत की जरूरत है। अभी देखते हैं 5 से आगे जाते हैं, अगर मैं थोड़ा सा अभी गाइड करूंगा और फिर उसके बाद चेक कीजिएगा 5 से ऊपर जाते हैं या 5 से नीचे आते हैं। ठीक है, 5, 4, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। अब मैं गाइड करने के बाद देखें कि आपका स्कोर बेहतर आता है या और नीचे चला जाता है। ठीक है ना, चलिए आएगा बेटा, पहले दिन ही समझ आ गया तो क्या बात। रिकमेंड सर्फिंग फॉर डैश हॉलीडेज इन द समर। फॉर डैश हॉलीडेज कहता है जैक्स एडवाइस फॉर डैश हॉलीडेज इन द समर। अब कहता है नीड टू बी क्वाइट, काफी। अब यहाँ पर क्वाइट गुड, क्वाइट एक्सपर्ट, क्वाइट बिगिनर, लर्नर क्या आएगा। फिर कहता है डैश हैज गुड क्वालिटी एंड सर्व्स schools, good surf schools at dash beach, confirm beach का कोई नाम होगा। सर्फ एट लास्ट फॉर 1, या तो 1 डे होगा या 1 वीक होगा या 1 ईयर होगा। कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द लोकल क्या, लोकल शॉप्स है, लोकल क्या, वहीं पर लोकल का मतलब इलाके की आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेस्ट मंथ टू गो, अब आपको क्या बताना है, कोई महीना बताना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल।
और फिर वहां का टेम्परेचर क्या होता है वो डिग्री बताना, और यूरोस पर डे, यूरोस आ गया। अब यूरोस कितना अमाउंट पर डे, अमाउंट क्या है। और उसके बाद कहता है ऑल्सो एडवाइजेबल टू हायर फॉर वार्म, गर्माई के लिए आप क्या हायर करें, कपड़े, जैकेट, मफलर, क्या, वो आपको सुनना है। ठीक है, कि मैंने थोड़ी सी गाइडलाइंस दी तो आपको एक आइडिया हो गया कि आपके जवाब में क्या आ सकता है। तो अब आप देखिएगा कि आपका जो स्कोर था वो 5 से 6 हुआ, 8 से 9 हुआ, या वहीं पर रहा। चलिए, I'm think Listen carefully and answer questions 1 to 6. Jack, I'm thinking of taking the kids to the seaside on a surfing holiday this summer, and I wanted to ask your advice, as I know you're such an expert. Well, I don't know about that. But yes, I've done a bit of surfing over the years. I thoroughly recommend it. I think it's the kind of holiday all the family can enjoy together. The thing about surfing is that it's great for all ages and all abilities. My youngest started when he was only 3. Wow, but it's quite physically demanding, isn't it? I've heard you need to be pretty fit. Yes, you'll certainly learn more quickly and won't tire as easily. Well, that should be okay for us. You've been surfing a few times in Ireland, haven't you? Yes, there's some great surfing there, which people don't always realise. And which locations would you recommend? There seem to be quite a few. Yes, there are loads. Last year we went to County Donegal. There are several great places to surf there. What about in County Clare? I read that's also really good for surfing. Yes, it is. I've been there a few times. Most people go to Lahinch. My kids love it there. The waves aren't too challenging and the town is very lively. Are there good hotels there? Yes, some very nice ones. And there are also a few basic hostels and campsites. It's great if you need lessons, as the surf schools are excellent. Sounds good. Yes, and there's lots to see in the area, like those well-known cliffs. I've forgotten the name of them. Oh, don't worry. I can look them up. I've also been surfing in County Mayo, which is less well known for surfing, but we had a really good time. That was a few years ago when the kids were younger. There's a good surf school at Karaniski Beach. How do you spell that? CarrowNiskey. Okay. I put the kids into the surf camp they run during the summer for 10 to 16-year-olds. Oh, right. How long was that for? 3 hours every day for a week. It was perfect. They were so tired out after that. I can imagine. One thing we did while the kids were surfing was to rent some kayaks to have a look around the bay, which is nearby. It's really beautiful. Oh, I'd love to do that. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. Now, the only time I went to Ireland, it rained practically every day. Yes, that can be a problem. But you can surf in the rain, you know. It doesn't have the same appeal somehow. Well, the weather's been fine the last couple of years when I've been there. But actually, it tends to rain more in August than in the spring or autumn. September's my favourite month because the water is warmer then. The only problem is that the kids are back to school then. I know. But one good thing about Irish summers is that it doesn't get too hot. The average temperature is about 19 degrees, and it usually doesn't go above 25 degrees.
That sounds all right. Now, what about costs? Surfing is a pretty cheap holiday, really. The only cost is the hire of equipment. You can expect to pay a daily rate of about €30 for the hire of a wetsuit and board. But you can save about €40 if you hire by the week. That's not too bad. No. It's important to make sure you get good quality wetsuits. You'll all get too cold if you don't. And make sure you also get boots. They keep your feet warm, and it's easier to surf with them on too. Okay, well, thanks very much for that. Yes. Score, please. पांच। अच्छा, प्रीवियस भी लिखे और करंट भी लिखे। यूं लिखे 5, अगर और आगे दूसरा स्कोर लिखे 6। प्रीवियस 8, नाउ 10, 5 and 7, नाउ 10, 5 and 7, ये भी सही है। प्रीवियस 4, अभी भी 4, प्रीवियस 6, नाउ 7। चल, मैं आप प्रीवियस 9, नाउ 6। ओह, ये गलत हो गया। चले, मैं दोबारा आपको गाइड कर रहा हूँ एक टेस्ट के हवाले से। अब आप चेक कीजिएगा कि अब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। We're probably looking. Pretty regularly, so there's no need for that. We also offer additional hurry. We can put you in touch with a reliable one who can come out straight away. And the same thing if you. What was that again? Cherville. Finished contained. The week beginning the 14th, if possible. So I'm sure I can help you. Part 1. You will hit. अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आपके पास जो ब्लैंक्स है उसमें कुछ टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। कभी भी जो आर्टिकल होते हैं ना, वो कभी बदलते नहीं है, याद रखना। जो आर्टिकल्स अगर एन लिखा है तो कभी बदल ही नहीं सकता, वो लाजमी एन बोलेगा। और तुम्हें फौरन सुनना है उसने एन के बाद क्या बोला, वही तुम्हारा जवाब है। ये है सुपरलेटिव डिग्री। वो सुपरलेटिव डिग्री बोलेगा। देखो यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री नजर आ रही है, ये बोलेगा सो लॉन्गेस्ट और टॉलेस्ट, लेकिन इसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड बोलेगा, होगा वो भी सुपरलेटिव डिग्री में, याद रखना। यहाँ लिखा हुआ है मेक अ डैश पावर्ड बाय बलून। अब यहाँ पर मेक है, यहाँ पर कोई दूसरा वर्ड बोलेगा, मेक की जगह पर आपकी जगह पर रहेगा। फिर कहता है बिल्ड मॉडल कार्स ट्रक्स। देखो ये कार्स है, ट्रक्स है, एंड तो अगला नाउन आने वाला है। जब एक कार है, ट्रक है, तो दूसरा क्या मोटरसाइकिल हो सकती है कोई। मॉडल कार्स ट्रक्स एंड व्हाट, एंड लर्न हाउ टू प्रोग्राम, टेक पार्ट इन अ कंपटीशन टू बिल्ड द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट यहाँ कुछ और बोलेगा। क्रिएट अ शॉर्ट, शॉर्ट की जगह पर वो कुछ और बोलेगा। शॉर्ट क्या है, शॉर्ट क्या है, शॉर्ट की जगह वो कुछ और बोलेगा। देखना आप शॉर्ट को कैसे बोलेगा। उसके बाद नीचे देखो, टेक्निक समझना। यहाँ लिखा है बिल्ड और उसके बाद कॉमा है, फिर आगे लिखा है एंड प्रोग्राम। तो अब यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो कोई ना कोई वर्ब होगा। ऊपर संडे आपको क्या बताया, संडे आपसे कहा देखो यहाँ बिल्ड लिखा है, कार्स है, ट्रक्स है, तो यहाँ पर नाउन आएगा। यहाँ पर बिल्ड लिखा हुआ है, प्रोग्राम लिखा है, दोनों वर्ब है, तो यहाँ पर भी कोई वर्ब आने वाला है। हेल्ड ऑन, आपका प्रेपोजिशन नहीं बदलेगा, कोई ना कोई डे आ रहा है। कौन सा दिन है बताना है, लोकेशन एड्रेस बताना है। प्लेंटी ऑफ डैश इज अवेलेबल, प्लेंटी ऑफ क्या, प्लेंटी ऑफ फूड,
देखते हैं अब आपका क्या स्कोर आता है। अब जो आपका स्कोर आएगा ये आपका सही मानों में स्टार्टिंग स्कोर है, जहां पर आप स्टैंड कर रहे हैं। और अगर आपने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है तो इसी तरह से जब आप मेरे साथ 28 पार्ट 1 की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका चौथा टेस्ट है, बुक 16 टेस्ट 1। अपने मार्क्स जो मैंने आपको चेकलिस्ट बनाने के लिए कहा था ना, कि आपको एक चेकलिस्ट कहा था, ये बना लीजिएगा और उसमें मार्क्स लिखते रहिएगा। आज आपने जो टेस्ट कर लिया उसका स्कोर अपने पास लिख लीजिएगा कि ये मैं कर चुकी हूँ। डन, टिक लगा दिया। मैंने करवाया तो टिक लगा दिया, क्योंकि स्कोर नहीं होगा उसमें। तो अच्छा, ये कर लिया मैंने। आज आपने बुक 17 का टेस्ट 1 2 3 कर लिया है, 4 आपका आपने नहीं किया। उसके बाद अब आ गए आप 16 के टेस्ट 1 पर। अब आप देखते हैं 16 के टेस्ट 1 पर मैंने फुल्ली आपको गाइड किया। अब आप देखते हैं आप कितना इंप्रूव करते हैं। चलिए। Hear a man phoning to find out about some children's engineering workshops. First, you have some time to look at questions 1 to 3. Now listen carefully and answer questions 1 to 3. Hello, Children's Engineering Workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have two daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes, our tiny engineers workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it's inside, they can drop it from a height and it doesn't break. Well, sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Hey, well, all this sounds perfect. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Now, Carly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So presumably she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. So they learn a bit of coding. They do. They pick it up really quickly. We're there to help if they need it, but we can one another too. Right. And do they have competitions too? Yes. With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different.
which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it with special animation. And software. You'd be amazed what they come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human, and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Perfect. So, is it the same price as the tiny engineers? It's just a bit more. £50 for the 5 weeks. And are the classes on a Monday too? They used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay, that's better for me actually. And what about the location? Where exactly are the workshops held? They're in building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fadston Industrial Estate. Sorry? Fadston. That's Fradstone. And that's in Glassford, isn't it? Yes, up past the station. And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. So, would you like to enroll Lydia and Carly now? Okay. So, can I have your full name? चले भाई स्कोर चेक करें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं स्कोर प्लीज पांच बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा आपको नेक्स्ट 9 6 8 7 4 एक्स्ट्रा लेवल बेटा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है बहुत ज्यादा 4 आने नहीं चाहिए अच्छा असाइनमेंट जो आप करेंगे ना वो आपको हेडफोन लगाकर करना आप वो चेकलिस्ट अपने साथ रखें आज रात सोने से पहले आप बुक 11 का टेस्ट 1 2 3 और 4 करेंगे अभी 11 बज रहे आधा घंटा आप आराम से बैठे अभी आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर लिंक्स मौजूद है आपको मैंने भेजे थे आज दोबारा शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर बुक 11 से आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे बुक 11 आज रात का असाइनमेंट है कल क्लास लेने से पहले पहले बुक 12 भी करेंगे आप ठीक है 17 मैंने करवा दिए कल 16 को मैं मुकम्मल करवा दूंगा 17 16 मेरे साथ हो गई 11 12 कल करके आनी है और कल का असाइनमेंट होगा 13 14 और 15 क्लियर कल इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे सेम टाइम इन सेम चैनल में अस्सलाम वालेकुम